a warm welcome to one and all. We all have gathered here for the 45th Foundation Day celebration of Cine Montage. And for the occasion, we have with us Shri Alok Tiwari sir, Executive Editor, Lokmat Times, as the chief guest. I would like to invite Shri Alok Tiwari sir, Shri T. Swaminathan sir, Shri Manmohan Sen, Shri Tapas Saha sir, and Shri Arup Banerjee sir for lighting the lamp. No problem. Thank you. 16th April is the birthday of an exceptional actor, Charlie Chaplin. Cine Montage was established way back on 16th April 1978 with a prime initiative of late Gora Ganguly. Cine Montage had been premier film society from central India, enjoying growing patronage from various strata of the society. It was a golden era for new wave and parallel cinema back then, and the members had rare privilege of enjoying and appreciating realistic new wave films from all over the globe, including best of Indian regional cinema. These included films of directors like Andrei Tarkovsky, Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, Satyajit Ray, and many more. Among those who attended these screenings way back then were renowned artists, film students, professors, poets, writers, etc. Shri Mahesh Elkunchwar and poet Grace, just to name a few. Besides screening of films, Cine Montage also conducted film-based seminars, film appreciation workshops, retrospect of the renowned film directors, small film festivals, and even stage plays. Although Cine Montage had a brief pause for some years from the advent of TV and other media, it was revamped by the film enthusiasts in 2009 with the kind support of Bengali Education Society, Nagpur. Cine Montage is extremely grateful to them. Since then, practically a movie is being screened on every Sunday evening at Bengali Education Society's Dinanath Auditorium. Over 250 movies of eminent filmmakers from various countries have been screened here. Apart from old and legendary directors, these films also included works of eminent present-day Indian as well as foreign directors from all over the world. The Film Society is registered with Charity Commissioner Nagpur and a
affiliated to the Federation of Film Societies of India. The present member of the Managing Committee, Shri Ram Tayade, President, Shri Jaishankar, Secretary, Shri Pradeep Maitra, Junior Secretary, Shri Pradeep Ganguly, Treasurer, and other members of the Executive Committee, Shri Vijay Kupreddiwar, Shri Tapas Saha, Shri Prashant Joshi, Shri Surendra Mishra, and Shri Prafulla Das are taking care of the activities of Cine Montage. Keeping in mind the primary objective of FFSI to promote good, realistic, art house cinema, our endeavor would be to acquire and screen these movies which would hardly ever reach to the commercial cinema theatres. And I can gladly say we all present here are making efforts towards this goal. Moving ahead, I would like to introduce our guests for the evening. Shri Alok Tiwari. A journalist of repute over 4 decades, Shri Alok Tiwari is presently an executive editor with Lokmat Times, Nagpur. Earlier, he had served with the Times of India and the Hitwar in a similar capacity. He was educated at Nagpur University and the University of Wales, Cardiff, UK. Shri T. Swaminathan. Shri T. Swaminathan is a retired professor from IIT Madras and a film scholar. Earlier, he was a scientist at NEERI, Nagpur, and a reader at CBT Anna University, Chennai. I would request Mr. Asit Sinha to welcome Shri Alok Tiwari sir with a floral bouquet. बाजू बाजू Thank you, sir. बाजू Now I would request Mr. Ramesh Borkute to welcome Shri T. Swaminathan sir. I understand you all are gathered here to listen to the guest for the evening and not me. So without further ado, I would request Shri T. Swaminathan sir to share the details of his journey with Cine Montage. Thank you, Rita. Good evening. This is indeed a momentous occasion for Cine Montage being the 45th Foundation Day. I remember, I think last Foundation Day also I had the chance to speak on this occasion. And I'm really thankful to Taireji and Jessica Ji for giving me this opportunity to share some of my views on this. My association with Cine Montage is fairly recent in the sense that it's only about 7 years old compared to some of the founding members who were present here. They certainly would have a lot more to discuss and share. Nevertheless, whatever journey I have had, so, I certainly feel it honored to share some of them. My experience with cinema in the early days was very limited. Being from a middle class family, it was restricted to just a few occasional watching of a few Tamil movies with family and friends. Till I joined IIT Kanpur in the 70s, I was not exposed to anything else. So that is where I got introduced to, I would say, a liberal politics movement. And as a consequence of that, I got exposed to the alternate view of culture, which included poetry, theatre, and cinema. That is the first time,
just a small group of us, we used to sort of discuss about the new forms of cinema that were coming. Primarily at that time it was the Bengali and to a little extent the Malayalam movies. And IIT Kanpur being quite away from the city, and the campus didn't have any projection facilities. Nevertheless, we could discuss about some of these movies as well as all these other nuances associated with those movies. And it gave us a very satisfying, it gave us a very broad exposure to greater, than the narrow narrow view that normally one gets. Post Kanpur, I almost lost any opportunity to follow it up, partly due to my work commitments. So then in IIT Madras, where I spent most part of the time, we had film club for all the students as well as the staff. And it was famous for its open air theatre, which is a very rare one in a campus like this. And every Saturday we had a movie, film screening. And the open air theatre had projection facilities comparable to any commercial theatre. Unfortunately, and this open air theatre could accommodate almost about 2,000 to 3,000 people at a time. And every Saturday, religiously, whatever happens, except for 2 occasions in a year, when the open air theatre gets used by the students for the cultural festivals, every Saturday at 8 o'clock there will be a movie. But only problem was, it was a mainstream movie, at a commercial. And even though we had mixed languages, it is primarily the Hollywood movies and the Bollywood movies, and still it was the need for the students and others at that time. So only when I got, I moved to Nagpur somewhere in 2016, I came to know about Cine Montage, and immediately I joined it. Since then, for the last 7 years, Sunday screenings at Cine Montage has been an integral part of my life at Nagpur. Whatever happens, all my other programs, travel programs or any other activities that I would like to participate in Nagpur, it is always tailored to ensure that the Sunday screenings are not affected. As a result, if you look at the photos that we religiously post after every screening, you would find me sitting at the second or the third row, that corner, in this corner. Almost every movie screening you would find me there. And that is what I enjoyed most in with Cine Montage. And this is an opportunity that I got to watch so many different types of different genres, different languages, different countries. And I would say that in this last 7 years I had seen probably many times the number of movies I would have seen for the rest of my life put together. So that is what, for which I am very grateful to Cine Montage. Okay, I talked about the journey. This journey is not my journey alone. I'm sure it's a journey in which all my fellow travelers, the members of Cine Montage, are a part of it. And Cine Montage that way is a very unique organization, which, as was pointed out earlier, that every Sunday it has been made possible that it's sort of almost mandatory that there will be a movie here. And that such a thing is possible
only because of the shared vision and the shared commitment that the members have for promoting and inculcating this world cinema, this new age cinema, orthodox way, whatever we call it, as well as to express our support and appreciation for the time and effort that so many people have put in making these films and bringing it to us. Because these are not the kind of commercial films which are made for money. These are made for people like us who can appreciate it. So this is the kind of commitment that sustains this organization as well as organizations of this time. So any journey that way, I would say that would have its own interesting and memorable moments. So in that sense, I also recollect very happily, very fondly, the several things that we have had in this last few years, particularly the sort of discussions that we used to have after the screenings on some of the days, the special lectures shared by where the senior members of the Cine Montage shared their experiences, and special talks from invited celebrities on various occasions, as well as the special screenings or the retrospectives and other special types of screenings that we used to have to celebrate various aspects. So all in all, I would say that journey is very satisfying experience, and such a journey has been made possible only because of the tireless efforts of several members here, but they were taken pains to ensure that the activity is maintained and continued. And I am sure with such kind of dedication and commitment that all the members have shown in Cine Montage, I think it's quite natural to expect, and I sincerely hope and wish that Cine Montage will grow in strength and live on to see its centenary. Though certainly I won't be part of it, but I am sure that we will all welcome such a day. So on this high note, I would like to conclude, and I again thank all of you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. I think there is a class of audience, those who appreciate the world cinema, but somehow we are not reaching out to them. So I would like to request the managing committee of Cine Montage to organize a film appreciation workshop or something like that, so that more and more people join in. Because at Cine Center also many members inquire what is world cinema. They don't even know that such organizations are there which organize these screenings of these movies. Now I invite Shri Alok Tiwari sir, our chief guest for the evening, to say a few words. Thank you. Just excuse me for a moment. Mute it. Very good evening, friends. मेरा एसोसिएशन सिने मोन्टाज से goes back very long ago. मुझे शायद ये I think when I just began my career as a journalist and having attained a little bit of position, तो पहली चीज़ ये कोई भी जर्नलिस्ट करता है कि हम कुछ ऐसे एलिटिस्ट काम करें जो कॉमन मैन नहीं कर पाते हैं। संडे को छुट्टी हुआ करती थी और हमारे
बुधनकर साहब जो उस समय जब मैंने ज्वाइन किया तब वो एडिटर नहीं थे, पर शॉर्टली आफ्टरवर्ड ही बिकेम एडिटर. सो ही एनकरेज. और यहीं आके हमारे साथ में एक पुराने कलीग थे मिस्टर राजकुमार सरकार, वो आजकल दिल्ली में है. एंड वो उनकी वजह से प्रदीप दादा, गोरादा, इन सब से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे खींचने की कोशिश की. और मैं इतवार को, उस समय शायद ISI हॉल में स्क्रीनिंग होती थी और आते थे, बहुत भीड़ होती थी. शायद अभी जो नंबर है उससे 3 times प्रॉबेबली लोग हुआ करते थे. और मुझे उस समय काफ़ी ब्लैक एंड वाइट और वर्ल्ड सिनेमा की जो बात की आपने, वो उस किस्म की मूवीज़ स्क्रीन होती थी. और मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आता, पर फिर भी क्योंकि वो एक एलिटिस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी थी और एक आई वाज जस्ट अबाउट 18 years old एंड ऐसा लगता था कि भाई इससे जुड़े रहें तो कुछ अच्छा है एंड इट्स समथिंग वेरी प्रेस्टिजियस. सो आई यूज्ड टू गो देयर. और ये प्रदीप दा, हमारे गोरा दा खासकर, और एक और बंगाली मित्र हैं मेरे, संजीव, जो यहाँ नहीं है शायद अभी, संजीव गांगुली, मनमोहन, ये सब आया करते थे और वो उन फिल्मों के बारे में यही तारकॉस्की और बायजा एंड ऑल दोस थिंग्स, सत्यजीत रे, बेनेगल, इनके बारे में ऐसी बातें किया करते थे. और मुझे लगता था यार ये इस एंगल से मुझे क्यों नहीं समझ आता है. जैसे ये लोग समझते हैं मूवीज़ को, वैसे मैं क्यों नहीं समझ पाता. वो मुझे आज तक नहीं समझता. और इसीलिए जब जयशंकर का फ़ोन आया तो मैंने उसको बोला भी कि मुझे यहाँ क्यों बुला रहे हो यार, मुझे आई एम नॉट इवन अ प्रॉपर स्टूडेंट ऑफ सिनेमा. मैं आता था, ऐसे मिलता था और स्क्रीनिंग में आया करता था. मेरे दोस्त लोग मजाक करते थे कि यू गो देयर जस्ट टू एंजॉय द सेक्स सीन्स इन द मूवी, दैट यूज्ड टू हैपन. पर मे बी दैट वाज द पार्ट आल्सो. बट मुझे ये कई बार लगता भी था कि यार ये मूवीज कुछ जमी नहीं, बहुत स्लो हैं, बहुत यानी जो आर्ट हाउस सिनेमा जनरली हम लोग समझते हैं. बट यस, आई मीन देयर यूज्ड टू बी अ मैसेज एंड ऑल. तो एक दिन ऐसी यानी कि जब काफ़ी साल बीत गए और फिर मैं नागपुर छोड़ के भी चला गया, सीने मोन्टाज भी कोई गलत दिनों से मैं आ गया, शायद जो उतनी एक्टिविटीज़ नहीं रही. तो बुधनकर साहब थे पर, एंड बुधनकर साहब के बारे में एक बात है कि वो हमारे संपादक तो थे ही, पर ही हैड अ नैक ऑफ बीइंग अ फ्रेंड एज वेल. तो उनके साथ ऐसी ड्रिंक्स पे एक आध बार बैठे हुए मैंने यही बात की कि यार साहब आप भी जाते हैं, आप तो प्रेसिडेंट हैं, और यानी ये जो मूवीज़ को देखने का ये जो तरीका है, ये जो एंगल है, ये कैसे डेवलप किया जाए, एंड हाउ कैन यू काइंड ऑफ अप्रिशिएट मूवीज बेटर. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही मुझे, जो मुझे आज तक मेरे साथ रह गई कई मामलों में. यानी जैसे हम लोग, एक एक्सपर्ट जो होता है वो तो समझते ही है चीज़ों को, एक एक्सपर्ट व्यू से समझता है कि भाई ये इसमें क्या अच्छी चीज़ है, क्या नहीं है, कैसी बनी है. और उन्होंने कहा कि देखो, यू आर इन अ वेरी unique and a good advantageous position as a person, as a common person. So you have only one criteria of judging a movie or any other thing. वो मुझे बात यानी बाद में पेंटिंग्स के बारे में भी और क्लासिकल म्यूजिक के बारे में भी याद रह गई, जो बुधनकर साहब ने की थी, और मैं बरखा को भी शायद कभी बताया था कि भाई देखो, तुम एक आप सिर्फ जब कोई चीज़ से, कोई भी आर्ट हो, मूवीज़ हो, पेंटिंग्स हो, म्यूज़िक हो, आप उसको ऐसे देखो कि आप उससे कैसे रिलेट कर रहे हो. आर यू एंजॉइंग इट, आर यू गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. और यदि वो इफ इट इज गेटिंग टू यू, देन इट इज अ सक्सेस. बट इफ इट इज नॉट, देन देयर इज सम प्रॉब्लम विद द मेकर ऑफ दैट आर्ट, नॉट यू. मैंने कहा यार ये इट वॉज काइंड ऑफ
you know, very liberating kind of thought. Suddenly the key is in my hand. So फिर मैंने सोचा कि मूवीज से रिलेशन तो हर एक का होता ही है, हम हिंदुस्तानियों का तो बहुत होता है। तो बचपन से देखते आए थे, तो उस समय माँ पिताजी के साथ जाया करते थे, पॉपुलर मूवीज ही देखते थे उस समय की जो, और उस समय रीजन्स बहुत आते थे। तो मुझे एक उसका एडवांटेज ये हुआ पॉपुलर मूवीज का कि पुराने गानों का शौक हो गया, और वो एक समथिंग दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री टू मी पर्सनली, that the music of Hindi movies particularly of 50s and 60s is something that I think is a great cultural treasure or legacy that we have. तो तलत साहब, रफ़ी, लता, उन सब के मुन्ना डे के गाने जो मेरे जन्म के पहले बने हुए हैं बहुत सारे, बट स्टिल आई एंजॉय देम एंड आई काइंड ऑफ, तो मुझे वो उससे मिला। बाद में जब आज वो मूवीज में देखता हूँ तो गाने तो उतने ही अच्छे लगते हैं, पर मुझे लगता है कि यार ये मूवी जड़ी कुछ यानी काफ़ी बकवास सी भी है, उसमें ऐसा लगता है कि सिर्फ गाने ही डालने के लिए मूवी बन गई, बाकी उसमें कुछ ऐसे बहुत कुछ ऐसे उसमें से मिलता नहीं। तो देयर इज दिस पार्ट ऑफ ग्रोथ दैट यू नो यू समटाइम्स डू इट। फिर थोड़ा कॉलेज वॉलेज में आए, सीने मोन्टाज का भी एक्सपोजर हुआ, तो वन बिकम्स अ लिटिल स्नूटी, लगता है कि मेन स्ट्रीम सिनेमा तो बहुत बकवास है, कुछ नहीं है उसमें, गार्बेज है, एस्केपिस्ट है, वो छोड़ के हम थोड़ा अच्छा प्रोग्रेसिव ये वो देखेंगे। बचपन से पिताजी की वजह से थोड़ा एक प्रोग्रेसिव बैकग्राउंड था घर में, तो ग़ज़ा अहमद अब्बास जैसी की मूवीज़ देखा करते थे, या इवन राज कपूर की अर्ली डेज में वो कुछ तो बातें करता था कि समाज कैसा होना चाहिए, और वो उसमें एक मैसेज होता था। फिर 80s में तो ऐसा लगने लगा कि अभी ऐसी है, तो तब तक आई हैड नॉट हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर बोधनकर, तो उसको हम काफ़ी शान। और मुझे याद है कि एक बहुत पॉपुलर मूवी आई थी, ये अपनी कमल हसन की, व्हाट वाज द फर्स्ट हिंदी, एक दूजे के लिए, और मुझे वो रिव्यू करने भेजा गया था। मैं आई वाज अ वेरी न्यू रिपोर्टर, मेरा कोई काबिलियत नहीं थी फिल्म के बारे में लिखने की, और मैंने उसको आई जस्ट पैंड इट लाइक एनीथिंग, एंड इट टर्न्ड आउट कि वो पंचशील सिनेमा में चल रही थी, और पंचशील सिनेमा हैपेंड टू बी एन एडवर्टाइजर ऑफ इतवाद एट दैट टाइम। तो उन्होंने ऐड बंद कर दिया, और इतवाद वाज अ स्ट्रगलिंग पेपर कि यार ये कैसे लिख दिया कुछ भी, इतनी हिट और इतनी मूवी है, और इसको, तो दैट वाज अनदर पीस ऑफ लर्निंग कि आप ऐसे यानी आप कुछ भी समझें तो ऐसा कुछ लिख नहीं है। और उसके बाद में मुझे याद है कि एक दिन सीनियर पर्सन वाज असाइन्ड टू री-रिव्यू द मूवी, and the Hitwad 2 weeks later carried a fresh review praising the movie कि what makes एक दूजे के लिए क्लिक। वो मुझे यानी फिल्मों से ज़्यादा एक जर्नलिज्म का बड़ा लेसन हुआ कि भाई कैसा रहना चाहिए। खैर वो जर्नी से उस समय अमिताभ बच्चन जी का समय था, और ये उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज, और ऐसा लगता था यार ये तो सब बहुत बकवास है। और बाद में जब बोधनकर जी ने बताया कि आप उसको देखो, और उसको एक हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है कि एक दूसरे के लिए भी जो सक्सेस हुई तो कुछ तो उसमें रहा होगा, क्यों इतने लोग देखने जाते हैं। संतोषी माता की भी एक मूवी आई थी, उसमें लोग चप्पल बाहर निकाल करके अंदर देखने जाते हैं, तो कुछ तो वो मास अपील है उसमें, कुछ तो उसमें कनेक्ट है एक लोगों के साथ, वो जानने की कोशिश करो, वो देखो, और तुम एंजॉय करो नहीं करो वो तो अपनी एक पर्सनल एक ओपिनियन आप उसकी बना लेना, वट एवर यू कैन डू दैट, एंड दैट्स हाउ इट बिगैन। तो उसके बाद मूवीज देखने लगे काफ़ी, तो उसमें जो इवन पॉपुलर मूवीज भी थी उसमें मैंने देखा कि एक देयर इज अ थ्रेड, देयर इज सम काइंड ऑफ मैसेज दैट कम्स अक्रॉस।
एंड उसमें कहीं ह्यूमन एंगल होता है, कहीं एक हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट होता है, कहीं पे कोई फैमिली की या इसकी बात होती है। राइट डाउन अब मैं अपने बच्चों के साथ फिर वो देखने लगे तो हॉलीवुड की ये सब मूवीज जो आती हैं वो भी जाता हूँ कभी कभी देखने। तो बड़ा यानी टेक्नोलॉजिकली दे आर अ ग्रेट थिंग। अब वो अवेंजर्स की और ये सब जो है स्टार ट्रेक एंड ऑल जो आती है बड़ी हॉलीवुड की द सो कॉल्ड बिग मूवीज, उसमें भी एक कहीं ना कहीं एक जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ह्यूमन एंगल नहीं होता है दे डोंट वर्क। एंड वो ह्यूमन एंगल को लाना, हाउ टू ब्रिंग इन दैट होल जैजी थिंग, नहीं तो अदरवाइज तो वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले बन के रह जाती है। सो हाउ टू गेट दैट थिंग, दैट हॉलीवुड से थोड़ा सा वो सीखने मिला कि भाई इतने स्केल पे जब आप मूवी बना रहे हैं कि जो अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस कल्चर्स उसकी अपील होना चाहिए, और वो इट्स अ प्योरली कमर्शियल kind of run. They are there to make money. So how do you but still get certain universal things in there which will appeal to a very wide range of audience. So even the so called ये जो स्पाइडरमैन मूवीज हैं उसमें जब आप देखते हैं तो कहीं पे वो आता है कि with great power comes great responsibility. So जो वो मैसेज है वो उसमें बार बार आता है, या कहीं जो हीरो है वो कैसे फ्लॉड रहता है एंड हाउ उसको उससे तकलीफ भी होती है बट स्टिल वो करता है। तो ये सब एक करने के बाद आई रिमेन्ड अ स्टूडेंट ऑफ फिल्म्स, और अभी जब रिटायरमेंट का समय आया तो इनफैक्ट आई वॉज कनेक्टिंग विद जयशंकर की भाई मुझे अब मेंबर करके यहाँ पे आना है, और जिससे मैं कुछ अपने now I will have time and I can then have some real exposure to good cinema. और जो पुराने दोस्त लोग हैं तो इन्होंने जब बुलाया तो मैंने यही कहा कि मुझे वैसे भाषण देने मत बुलाओ, वो मुझे ज़्यादा नहीं आएगा, गपशप करने बुलाओ, कोई कुछ पुराने दोस्त मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे और उसमें थोड़ा मज़ा आएगा। और in another 2-3 months when I hope to be free from my regular grind of profession. So I'd like to come back, and this is a great activity that I have seen grow and then not grow a little bit, and now again it is being revived. मेरी एक बड़ी पुरानी इच्छा थी कि एक फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स हुआ करता था फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में बहुत पहले पुणे में, वो मैं अफोर्ड तो नहीं कर पाता था, पर हितवाद की तरफ से मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई मुझे भेज दे वहाँ पे, तो मैं ज़रा पर वो हितवाद ने भी कभी नेवर ओब्लाइज मी। एंड अभी जैसे मैडम ने कहा कि मे बी वी कैन डू सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी हियर Cine Montage के, we have a lot of experts right here who can really explain good cinema to people. And I'm sure a lot of youngsters also may want to join in. I don't know कि ऐसा यदि कुछ हो कि कैसे फिल्में देखी जाएं और कैसे उनको उनके नुआंसेस जो हैं वो अप्रिशिएट किए जाएं, उसमें क्या क्या देखा जा सकता है। जैसे जो एपिक सिनेमा होता है जो मुझे अपील की आगे पॉपुलर, पर जो मुझे लाइफ में 3 फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं अभी भी, यानी आई कैन वॉच देम एनी टाइम, एंड दे आर नॉट लाइक रे फिल्म्स और बेनेगल फिल्म्स और गोविंद निहाला फिल्म्स, दे आर इन दैट ऑर्डर, मुगले आजम, बेनहर एंड शोले, दे आर एपिक सिनेमा। और मुझे लगता है कि इनमें कुछ बात है कि जब भी देखता हूँ तो कुछ उसमें से नया दिखता है, जो जैसे क्लासिक नॉवेल या लिटरेचर होता है ना, वो पुस्तक को जितनी बार भी पढ़ेंगे कुछ आपको उसमें दिखेगा, और वो इसीलिए शायद इतने बरसों बाद भी वो फिल्में हमको अपील करती हैं, और कुछ उसमें दिखता है, कुछ कभी कभी कोई बारीकियाँ जो हम पहले भूल जाते हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें, जैसे फिल्म इज़ सच अ मैसिव मीडियम, देयर इज सो मच टू सी इन दैट, उसमें म्यूज़िक भी है, उसमें ऑडियो विजुअल भी है, साउंड भी है, लिटरेचर भी है, डायलॉग्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, एक्टिंग होती है, सब जो तो कई चीज़ें उसमें हम वी कैन व्हेन वी हैव रिपीटेड एक्सपोजर्स वी गो ऑन लर्निंग। सो आई थिंक Cine Montage can sometime down the line, I don't know, I will have resource constraints and
constraints of Betty is basically getting people here, जो मैं समझता हूँ is a very real challenge. But if we can do something to get to the wider society, maybe in few years down the line it should be possible. So with that, I don't know whether I have offered you something, but with that I'll conclude and I'll welcome if there is any discussion here. It's great. So with all the best for next 45, 46 years and next 5 decades, hopefully we'll grow and have a great relationship with the city and do good work. So all the best and thank you very much. Thank you, sir. So, 45 years of continued passion for the cinema. Congratulations to Cine Montage. Now, I take this opportunity to present vote of thanks. On behalf of Cine Montage and everybody present here, I would like to thank Shri Alok Tiwari sir for accepting our invitation and gracing the occasion with his presence. I also thank Shri Swaminathan sir for his active participation. I express my gratitude towards the members of Cine Montage who always give their active participation for the initiatives of the club. The Bengali Education Society management and staff have been very supportive whenever we organize events here. A big thanks to all of them. I also thank all the volunteers who made the event successful. Thanks so much everyone for being with us today. So now it's time for the movie screening. I would like to announce the screening of Charlie Chaplin's 1925 movie Gold Rush. The duration is for 1 hour 35 minutes. Stay with us. In the next 5 minutes, we'll start the screening of the movie. Thank you so much.